Welcome to the World Understanding Life. To get latest update, please subscribe our channel. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो सेक्शन में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन सीबीएसई क्लास 8 और जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। फंडामेंटल राइट are the rights which are written in Indian Constitution. These fundamental rights include right to equality, right to freedom, right against exploitation, right against freedom of religion, cultural and educational right, and then right of constitutional remedies. Right to education was also added afterwards. तो आप आपके खाली समय में क्या करना चाहेंगे? So you will play, read, play archery, ball. अगर आपको ये करने से मना कर दिया जाए और आपको फोर्स किया जाए किसी पर्टिकुलर टास्क पे, जैसे कि रीड करना बुक, बाइंग बुक, रिव्यूइंग बुक, रीअरेंज द बुक, तो अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी फोर्स करते हैं तो आपको लगेगा कि आपके राइट यहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो आपका हक मारा जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। तो हक क्या है? व्हाट इज राइट? So a right is a specific act or behavior accepted by all the people and the government. This is the right of person. Expecting certain kind of a behavior from another person and the government, which is agreed upon by all, is also a right. ऐसा behavior जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है या सब ने माना है कि ऐसा बिहेवियर सोसाइटी में चल सकता है, उस बिहेवियर को कहेंगे राइट। जैसे अगर किसी को मस्जिद में जाना है, चर्च में जाना है या मंदिर में जाना है तो वो फ्री है, तो इसे हम कहेंगे राइट ऑफ रिलीजन। इफ अ पर्सन वांट्स टू गो टू मॉस्क, चर्च और अ टेम्पल, it is his own happiness. As far as it doesn't harm anyone, he can entitled to do that. वो कर सकता है। तो individual also expect that the other people or the government will not object him praying or pursuing the religion he wishes. आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते किसी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ये राइट ऑफ रिलीजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स यू 6 फंडामेंटल राइट्स, 7th वॉज एडेड लेटर ऑन। इसके तहत राइट ऑफ इक्वालिटी है, सेंस ऑफ बीइंग ट्रीटेड इक्वली, राइट ऑफ फ्रीडम है, मूव फ्रीली, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने बात को रखना, ये भी राइट ऑफ फ्रीडम में आएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। 7वां राइट टू एजुकेशन बाद में उसमें ऐड किया गया। तो राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर लॉ। सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। Equal opportunity is given to the people for the use of
well, tank, shop, and other public places. Equal opportunity for employment is for everyone in the state managed institute. Abolish the untouchability and use of titles conferred by foreign state. ये सब आएगा राइट टू इक्वलिटी में. And there are two exceptions to the right of equality. One, the government can make special provision for women and children. And second, it can also make special provision for the backward classes or socially deprived classes. ये इक्वालिटी को दो एक्सेप्शन रहेगी. एक्सेप्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल क्लासेस एंड शेड्यूल ट्राइब. दूसरा आपका राइट है राइट ऑफ फ्रीडम. इसमें आएगा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, freedom to form association and unions, freedom to move freely throughout the India, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to take up any profession or start business or trade in India. Third one is right of exploitation. इसमें आएगा protects all individual against exploitation such as begging, forced labor, slavery, human trafficking is prohibited, and children under the age of 14 are not allowed to work in the factory that is hazardous for the health. Next we had right to freedom of religion. इसमें आएगा India does not have a special religion. तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, उसे ऑफिशियल कोई भी रिलीजन नहीं है, विच मीन्स ऑल सिटीजन्स कैन फॉलो एंड प्रीच एनी रिलीजन विच दे वांट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन फॉर religious and charitable purposes. They can conduct their own affairs as they deem fit as long as it doesn't harm others, and educational institute can be erected in order to preserve the religious identity. Next fundamental right is right of cultural and educational right. So equal opportunity is given to all the citizens. All citizens of the country are free to pursue their own culture and religion. Special privileges are given to the minority sections of society, and minorities are allowed to conserve their language and culture by establishing their own educational institutes. What if these rights are violated? So, Constitution also gives you right of constitutional remedies. So, in which you can approach the judiciary if your rights are violated. That is also your fundamental right. If anyone found guilty of violating others' right, he or she is asked by the government not to do so. So, especially the Supreme Court, which is the guardian for Constitution in India, is conferred with this providing remedies, constitutional remedies. So, this right empowers Supreme Court to issue an order or a writ to enforce the fundamental right. The fundamental right of education was included through 86th of Amendment 2002. It guarantees free and compulsory education between the age of 4 to 16. That's primary education is made compulsory to everyone. Right was enforced from 2009 when Parliament passed the Right of Education Act. This is it. This is all about our fundamental rights which are mentioned in Indian Constitution. If you have any query, you are free to ask by commenting in this video. Thank you.